Namaskar. Warm welcome to you all. Good morning. I'd like to introduce Ma'am Meenakshi Fetwal, ardent lover, avid reader, poetess. Many words to address her, but she knows so well, and you guys also definitely know her. And then we have Mr. Atmaranjan sir, again an educator, avid reader, a poet, and he is a very good reviewer. Whatever you write, be it your poetry or be it your stories, he will give you a very nice feedback in terms of teaching, improving your teaching skills. And today we are having a small poetry session. And the idea here is that you guys normally, when you read or you write poetry, you do not share it with anyone. So here you will be sharing your poetry, and ma'am and sir will give feedback on that. They'll comment on that. Thereafter, we'll end with a small workshop session where they'll talk about the concepts of poetry and how further you can improve and enhance your skills. So have a good time and enjoy yourself. We'll start first with Varahi, one of our youngest poets, and she'll start with her poems. नमस्कार, मेरी कविता का नाम है एक माँ का बेटा, धरती माँ का बेटा। यह कविता मैंने परमवीर विक्रम बत्रा के बारे में लिखी है। सैनिक देखे गए वर्दी में, फर्क कभी जान न पाई। मम्मी बोली उनके कपड़े सरकारी हैं, जैसे तुमको स्कूल वालों ने वर्दी पहनाई। इतना तो था पता कि वह बॉर्डर पर समय बिताते हैं, नहीं पता था कठिन समय में भारत माँ की इज्जत बचाते हैं। फिर देखी एक फिल्म शेरशाह, सैनिक की नई परिभाषा समझ में आई। सोच रही थी इतनी बहादुरी एक सैनिक ने कहाँ से पाई। कैसे लड़ाई में रहकर भी प्यार वो कर पाता था, कैसे जंग में भी वह दोस्तों को हंसाता था। रात भर जागता, सुबह सवेरे फिर उठ जाता था। सबसे ऊंची चोटी को जीत कर भी वह और ऊपर भारत का झंडा फहराना चाहता था। पता चला उसको शहीद होने का सबसे बड़ा इनाम मिला था। पता चला वह फूल तो हिमाचल के बगीचे में खिला था। एक दिन शायद मैं भी उस जैसी हिम्मत खुद में ला पाऊंगी, शायद मैं भी गर्व से बॉर्डर पर जाऊंगी। वह था एक माँ का बेटा जो भारत माँ के आंचल में सो गया। कहानी जब उसकी खत्म हुई, वह अपना सा हो गया। धन्यवाद। नमस्कार सबको। सबसे पहले हमने वैराही की कविता सुनी। वैराही को मैं पहले भी सुन चुका हूँ और जैसे सब जानते हैं बहुत प्यारा बच्चा है। वैराही की कविता वैसी ही है जैसे इस उम्र के बच्चे की कविता होनी चाहिए और होती है। वैराही की कविता में वो सब चीज़ें हैं जो कविता लिखने के शुरू में लोगों के पास आती हैं। कविता जिस तरह से शुरू में हमारे पास आती है वैसी ही आई है। मुझे इस कविता में सबसे खूबसूरत ये लगा इस कविता में वैराही बेटा, और सब यहाँ जो पोइट्री लवर बैठे हैं, कविता से स्नेह रखने वाले लोग बैठे हैं, इस कविता में ये स्वर्गीय विक्रम बत्रा जो हमारे शहीद हुए हैं, कविता हालांकि युद्धों को इस तरह से अमूमन नहीं देखती है जिस तरह से लोग देखते हैं। युद्धों को कविता हमेशा युद्ध को बर्बरता की तरह ही देखती है। कविता मनुष्यता के खिलाफ ही देखती है युद्ध को, और दूसरे लोग राजनीति और तमाम तरह की जो आग्रह है वो युद्धों को बहुत जिस तरह से ग्लैमराइज या ग्लोरीफाई करती है, कविता उस तरह से नहीं करती है। मुझे इस बच्चे की कविता में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसने विक्रम बत्रा की उस पूरी कहानी में ये देखा कि विक्रम बत्रा अपने दोस्तों के साथ कैसे कैसे एक मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ, तो वो मनुष्य ही है। वीर सैनिक तो वो है, बहादुर भी है, जांबाज भी है। वो अपने राष्ट्र से भी इतना प्यार भी करता है कि वो कुर्बानी दे देता है। हालांकि मुझे वो ज़्यादा कर्तव्य निष्ठा लगती है, उसका एक मूल्य है कर्तव्य निष्ठा का, लेकिन उसमें एक मनुष्य होने की गरिमा को जो वैराही ने पहचाना, उसको रेखांकित किया,
वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। वैराही, बहुत बहुत बधाई तुमको। और ये जो सुंदर सी चीज़ तुमने देखी कि वो अपने दोस्तों के साथ खिलंदड़ा व्यवहार करता है और कैसे करता है, ऐसे ही होते हैं सब लोग। और युद्ध क्या होता है और वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो तो अंततः मुझे ये लगता है कि युद्ध या वीरता की जितनी भी कहानियाँ होती हैं, उसका एक बहुत अमानवीय पक्ष भी होता है, जो जिसको कविता विशेष रूप से देखती चिन्हित करती है। लेकिन इस बच्चे के पास कविता ऐसी आती है, ऐसे ही आएगी, सब बच्चों के पास ऐसे ही आएगी। बहुत खुशी की बात है कि वैराही कविता के साथ जुड़ी है। और हमारे यहाँ बैठे हुए सबसे कम उम्र की, या मैं बोलूँ बाल कवित्री है, बहुत सुंदर प्यारा बच्चा है। और जिस बच्चे के पास कविता आती है वो वैसे ही बहुत प्यारा बच्चा हो जाता है। बहुत बधाई, बहुत स्नेह वैरागी को। So, Varahi, I was very impressed with your poem. And like Sir said, you are too young to understand how gruesome war can be. But what you have picked up is the hero, Shahid Vikram Batra, which is so nice because he's a real life hero for us. And he's a hero who we can look up to. And he's a hero for us because Kargil War is not very far away from today, whereas 47, 71, 62, 5 are remote. So I guess you access Vikram Batra through the film Sher Shah, that's come in your poetry. And that reminded me of how important that media is also, the film media, and how film, history, fact, and a poet's imagination have worked together in your poem. That's lovely, that's excellent. What I did notice, of course, was also that your poet has that quality of intermediality, because when you were talking, what Sir said, when you were talking of Sher Shah, you were almost cinematic in that description. So that was great. Of course, you're working with rhyme and rhythm. Initially, everybody works with rhyme and rhythm, so that's great. Because we have lost rhyme and rhythm because we are doing free verse nowadays, but it had a lovely musicality to it. And it was a poem meant to be recited. And in your sweet voice, that poem came out as very beautiful. What really touched me was that you really felt what you were saying, and there was feeling in your poem. I was reminded of Thomas Hardy's very famous poem, The Man He Killed, in which the soldier says that he has just killed a man who was from the opposing enemy. But if he had happened to meet that man in Books and Brews and Books, on any cafe on the mall, then he would perhaps have made friends with him and shared a pint of wine with him, or even lent a quarter a crown to the other man, which highlights this, that heroes in the war can be avoided. There are brave people. That bravery on the border brings with it sadness, always, always, always. So we remember our martyrs, we remember our great heroes with great pride, but we pine for peace. That is the irony of war and war poems. But your poem is not about war so much. Your poem is about your hero, Vikram Batra, and it was beautiful. Thank you. कुदरत, पर्वत नदी चांद सितारे, सूरज और पशु पक्षी सारे, कुदरत के रूप ये न्यारे लगते हमें बड़े प्यारे। जब जब नभ में तारे जगमगाते हैं, तब तब चंदा मामा हमें सुलाते हैं। सुबह सूरज की किरणें अंधेरा मिटाती हैं, चिड़िया ची ची करके हमें उठाती हैं। उठते ही खबरों की जैसे मैं पापा के कानों में गुनगुनाती हूँ, तो कभी कभी अपना मनपसंद गीत गाती हूँ। स्कूल जाते जाते मैं सब पर प्यार लुटाती हूँ, बड़ों को नमस्ते, भूखे पशुओं को खाना खिलाती हूँ।
पर्वत को देखकर मैंने ठाना उस चोटी पे जाऊंगी। सफलता कितनी भी दूर हो मेहनत करके पाऊंगी। चलते चलते जब मैं थकी एक वृक्ष मुझे देख मुस्कुराया। मैं झटपट बैठी उसकी छाया में और उसका मीठा फल खाया। तेज हवा में उड़ते बाज को देख यह ख्याल आया, हिम्मत जिसने कभी न छोड़ी उसने अपने जीवन को सफल बनाया। धरती की मिट्टी से हम ईंटें बनाते हैं और उन्हीं ईंटों से घर और फैक्ट्री बनाते ही जाते हैं। यह सब धरती पर जहर फैलाते हैं। क्यों नहीं हम इन सबको कम करके दुनिया को हरा भरा बनाते हैं। धन्यवाद। दूसरी कविता जो वैराही ने पढ़ी उसमें मुझे सुबह वाले जो दृश्य है और जितनी मासूमियत से बच्चा सुबह को रिसीव करता है और वो सब अच्छा लगा। और मुझे ये लगता है कि कवि होने के लिए जिज्ञासा बहुत ज़रूरी होती है और इस बच्चे का जिज्ञासा भी है चीज़ों को देखने की, समझने की, मायनूकी बारीकी से। और वो जो छोटी छोटी काफ़ी सीधे सीधे भी और थोड़ा सा सांकेतिक और बिंबात्मक ढंग से भी जो दृश्य वैराही के पास आए सुबह के दृश्य वो सुनकर मुझे तो ये मुझे वैराही की ज़्यादा कविता लगी। हालांकि भूखे पशुओं को पता नहीं वैराही कितना खाना खिलाती है तो जो कवि है अगर वो नहीं खिलाता है तो उसकी कविता में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आएगी। अगर वो पशुओं को हो सकता है कुत्ते उत्ते को तो खिलाती भी हो, बिल्ली को भी खिलाती हो और मुझे नहीं लगता गाय को कभी खिलाती होगी या कुछ खिलाती अगर खिलाती भी होगी तो अच्छी बात है। अगर नहीं खिलाती है तो कविता में उसको गाय को ज़बरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है। अगर खिलाती है तो गाय बिल्कुल आए और बिल्कुल आए अपनी अपनी अपने सींगों के साथ भी, अपने अपने मुंह के साथ भी कैसा उसका मुंह है तो वैराही देखेगी कैसा उसका मुंह। एक पोइट को उसी तरह से उसको देखना चाहिए चीज़ों को जैसे उसके पास चीज़ें आती हैं। बहुत सुंदर कविता वैराही की उम्र के हिसाब से बहुत सुंदर। जो सर ने कहा मैं भी वही कहना चाहती हूँ। बाल सुलभ कविता थी, एज अप्रोप्रिएट, suitable, so there was that lovely engagement with the poem that you had. Your concern for nature, for environment is something that is splendid. We want all children to feel for the environment, and the very simple lifestyle that you have depicted in this poem is something to be desired, because children are also losing it, that naturalness of being. That was great, very nice, beautiful poem. That line पशुओं वाली बड़ों को नमस्ते और पशुओं, there is a disconnect because it doesn't connect. बड़ों को नमस्ते तो खिलाते नहीं है, आगे पशुओं को हम खिला रहे हैं, उनके पशुओं को खिला रहे हैं. So there is one little word missing, or maybe a substitution would make it better. That's what I think. Okay, Vita? Very well done. Very well done, Varahi. You're a great poet. Great poet. आप किसी भी माइक पे बोले सबको मैं सीधे मुंह कुछ कहा नहीं, सीधे मुंह कुछ कहा नहीं, लिख दिया सब अपनी कविताओं में। कविता उनको समझ न आई, बात रह गई हवाओं में। इन्हीं हवाओं का रुख मोड़ते हुए, अपने शब्दों को आप तक पहुंचाते हुए, आज मैं समृद्धि पाठक आप सभी को कुछ सुनाना चाहूंगी। उजाले के बारे में, लाइट सक्सेस के बारे में हम सब बात करते हैं, पर अक्सर हम जिसके बारे में बात नहीं करते हैं वो है हमारा बुरा वक्त, द डार्क फेज ऑफ आवर लाइफ, या यूं कहें तो वो दौर जो हमारी जिंदगी में अंधेरा था। अंधेरा चाहे अकेलेपन का था या पीछे हटकर हार मारने का। अंधेरा जितना काला है उसमें उतनी ही गहराई है। इसी गहराई पर है मेरी ये कविता।
चिराग जलाते ही अंधेरे मुझसे रूठ गए। जरा अंधेरों से पूछो ये उस रोशनी से खफा क्यों है। चिराग जलाते ही अंधेरे मुझसे रूठ गए। जरा अंधेरों से पूछो इस रोशनी से खफा क्यों है। क्या अंधेरे की शुरुआत भी हुई थी उजाले से। क्या हुआ उससे भी कोई खफा है कि अनहद ना खत्म होने वाली दूरी से लिपट गया। हो गया है मौन और अपने हर पल में अकेले सिमट गया। हो गया है मौन और अपने हर पल में अकेले सिमट गया। पूछता है यह भी अपने अंदर छुपे राजों से, उस मौन से, गुमनाम हंसी और चीखती आवाजों से। पूछता है यह भी अपने अंदर छुपे राजों से, उस मौन से, गुमनाम हंसी और चीखती आवाजों से। पूछता है नेकी से कि वो इतनी परेशान क्यों है। पूछता है नेकी से कि वो इतनी परेशान क्यों है। पूछता है झूठ से कि सबकी खुशी की शान क्यों है। हाँ अंधेरा है, हाँ अंधेरा है। शायद इसे एक चिराग जलते ही याद आ गया कि इसकी अनहदता का व्यंग्य बना देती है ये दुनिया। बस यूं कह कि रोशनी अंधेरे में शमा है। बस यूं कह कि रोशनी अंधेरे में शमा है। लेकिन हाँ अंधेरा यह जान चुका है कि जिसने अंधेरे को देखा है वही चिराग के उजाले को पहचानेगा। लेकिन हाँ अंधेरा यह जान चुका है कि जिसने अंधेरे को देखा है वही चिराग के उजाले को पहचानेगा। धन्यवाद। Not to one more, but ma'am, before I take leave from your afternoon, I just want to thank you, ma'am, because ये प्लेटफॉर्म मिलना इज नॉट सो इजी। और मैंने मैम से कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करवाओ, एंड मैम ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। मैम ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि ओके आई विल सी और कुछ भी। मैम ने एकदम से इनिशिएटिव लिया और तभी हमें मैम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम मतलब इतनी अच्छी टीम पर्सनैलिटीज़ के सामने हैं, हम बात कर पा रहे हैं। अदरवाइज मैम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम। और 4 लाइन्स और जाते जाते आई वुड लाइक टू से, एक चिराग बुझ सकता है हवा के झोंके से, एक चिराग बुझ सकता है हवा के झोंके से, पर उसकी गर्माहट अंदर से नहीं बुझा करती। और दौर हवा का ही रहता है कायम, आंधियां देर तक नहीं चला करती। और दौर हवा का ही रहता है कायम, आंधियां देर तक नहीं चला करती। बैठ के सुनो। हाँ, ना वैसे स्मृति की जो पहली कविता है, बल्कि पहली क्या एक ही कविता है, बाकी कुछ पंक्तियां कुछ नहीं। अंधेरे और उजाले के बीच का जो द्वंद्व है उस पर वो कविता है। और मुझे अच्छा लगा, अमूमन इस उम्र में बच्चे इस तरह से नहीं सोचते हैं कि अंधेरे की जो इंडिविजुअलिटी है या अंधेरे का जो व्यक्तित्व है उसके भीतर भी झांकें। और हालांकि उसके कई चेहरे, उसकी कई भंगिमाएं उसकी हैं। अंधेरे में एक कविता की बोध की बहुत लंबी कविता, बहुत गहरी कविता है। मैं उसके साथ ही जोड़ के इसको कह रहा हूँ। मैं स्मृति की कविता पे बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अंधेरे का कुछ और तरह का मेटाफर है। यहाँ मुझे अच्छी बात ये लगी, और सब बच्चे इस बात को गौर से सुनेंगे, कविता जो होती है वो जीवन के तमाम पक्षों में बहुत संवेदनशीलता से झांकती है। और जैसे हम कहते हैं कि राजनीति है या शासन है, ये सब तो विजेताओं के गीत गाते हैं, लेकिन कविता और साहित्य जो है वो पराजितों की खोज खबर भी लेता है, पराजितों के जीवन पर भी नजर डालता है, और पराजितों की मनस्थिति, उनका जीवन, क्योंकि मनुष्य है, पराजित हो, बल्कि विजेता ज्यादा क्रूर होता है और जो पराजित होता है वो ज्यादा मनुष्य होता है, वो ज्यादा मानवीय गुणों से संपन्न होता है, विजेता अहंकार से ग्रस्त होता है। तो ये साहित्य ही है, बल्कि कविता में कहूँगा साहित्य से भी ज्यादा, जो अंधेरे के दुखों को
या अंधेरे के व्यक्तित्व को उस पर भी प्रकाश डालता है, उसमें भी झांकता है संवेदनशीलता से, और पराजितों की बात भी करता है और पराजितों के दुख दर्द की बात भी करता है। उसमें ये संकेतात्मक ढंग से ये कविता प्रवेश करती है। और हालांकि बिल्कुल इसको समृद्धि जब हो सकता है साल 2 साल बाद दोबारा इस कविता को पढ़े देखे, हो सकता है इसमें और ज़्यादा इंटेंसली और ज़्यादा गहराई से कुछ चीज़ें आएँ, कुछ मेटाफर, कुछ और ज़्यादा चीज़ें आएँ कि ये और बड़ी कविता बने। लेकिन अभी भी ये कविता सुंदर कविता है। बधाई कि ये लीक से हट करके चीज़ों को ज़्यादा संवेदनशीलता से देखने की कोशिश है। और एक चीज़ और है कि कविता क्योंकि सारी मायूसी को, सारे दुखों को की कहानी कहती है, व्यथा कहती है, लेकिन कविता और साहित्य के अंदर तमाम निराशाओं को के भीतर झांकने के बाद, तमाम निराशाओं की व्याख्या करने के बाद भी प्रकाश की कोई किरण रहती है मौजूद, आगे निकलने के लिए कोई प्रेरणा रहती है मौजूद, जो समृद्धि की अंतिम 4 लाइनों में थी। तो वो कहीं ना कहीं वो कविता को सप्लीमेंट भी करती है। वो जो 2-4 पंक्तियां थी तो वो रहेगी, और निराशाओं का बिल्कुल गीत गाया जाना चाहिए, दुखों का, पराजय का बिल्कुल उसको भी देखा समझा, उसकी भी तो खोज खबर ली जानी चाहिए, और वो साहित्य और कविता की करेंगे। तो बधाई। Thank you, sir. Randhan sir ने जो कहा, I think I actually wanted to say the very same thing. But we are very happy, Samriddhi, that you have taken a philosophical idea, and you said that you are going to, you explore the depths of darkness and look at various aspects of the darkness. So it's not just a very simple binary between the light and dark, but that there are so many more aspects and complexities to it. I really like the poem. I agree with sir that you could work on the sharpness of the metaphors that you have used, as well as in the descriptions, and some are common, so you may want to change them or work on them. I don't know. I really liked this idea of अनहत्ता का व्यंग्य बना देती है. This is very, very appropriate because your freedom, your liberty very often is a challenge to society. So if they can't deal with it, they will turn it into a satire. So darkness has a depth which very often light does not have. So when you have light here, there is a sharp relief. But if we were suddenly dark, we would experience each other in many more ways, and all the other senses would come into play, and no one sense would dominate, which is the visual sense. Yeah. So that's great, and your poetry does reflect that. So I'm very happy with that. I really like the line where you said that the lamp is dark and is not lit anymore, but there is warmth inside it. So that was beautifully built up your last 4. That's a reference to your last 4 lines, na? And वो बहुत अच्छी लगी मुझे कि आंखों का दौर हमेशा नहीं रहता. Yes, and that it is air as we breathe, which is the norm. And storms come and storms go, which is absolutely beautiful. And the way you have embraced darkness shows the depth that you have in your character. And wish you well, and we look forward to some more. नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है और मेरी कविता का शीर्षक है पिता एक आदर्श। वो तालाब में स्थिर पानी सा है, वो किताब में एक अनसुनी कहानी सा है। वो तालाब में स्थिर पानी सा है, वो किताब में एक अनसुनी कहानी सा है। वो मेरी जिंदगी की कलम में स्याही है, वो मेरी हर मर्ज की दवाई है। वो रेगिस्तान में पानी का तालाब है, वो मेरी हर शंका का जवाब है। वो रेगिस्तान में पानी का तालाब है, वो मेरी हर शंका का जवाब है। वो कड़कती धूप में छाँव है, वो दुविधा रूपी समुद्र को पार करवाती नाव है। वो पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरण है, वो सही जीवन जीने का आचरण है। वो पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरण है,
वो सही जीवन जीने का आचरण है, वो ईश्वर की जागती प्रतिमा है, वो मेरी जिंदगी की गरिमा है। और क्या लिखूं उनकी प्रशंसा में, वो मेरी चुप्पी, मेरे दर्द, मेरे आंसू को अपना बना लेता है। वो मेरी चुप्पी, मेरे दर्द, मेरे आंसू को अपना बना लेता है और मेरे कुछ ना कहने पर भी ना जाने कैसे सब जान लेता है। वो प्यार और भावनाओं से परिपूर्ण है, वो प्यार और भावनाओं से परिपूर्ण है, पर फिर भी न कभी अपने दुख को जताता है, पर अपने आंसू को अंदर दबाता है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी कविता को विराम देना चाहूंगी कि पिता बिना मेरी ना कोई हस्ती है, पिता बिना ना कोई हस्ती है मेरी, ना कोई जमाना है, पिता के बिना ना कोई पहचान मेरी, ना कोई ठिकाना है, ना कोई ठिकाना है। धन्यवाद। मीनाक्षी ने पिता पर कविता लिखी। मुझे लगता है पिता पर बहुत ज्यादा कविताएं नहीं है साहित्य में। जाति भी, माता भी बहुत कविताएं, माओ भी बहुत कविताएं लिखते हैं, सब लिखते हैं। और माँ तो अपने आप में एक माँ जो शब्द है, वो शब्द ही अपने आप में पूरी कविता है, मुकम्मल कविता है। तो माँ लिखते हैं तो पोइट्री की फील आता है कविता। लेकिन पिता पर कम करता है। अभी एक बड़ी मशहूर कविता है कि पिता का प्यार देखा नहीं जाता है अक्सर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पिता पर मीनाक्षी ने सुंदर कविता लिखी और फील के साथ लिखी, पिता के बारे में वो कैसा सोचती है। कविता दरअसल होती ही फील के साथ है, उसमें सूचनाएं ज्यादा नहीं होती है और ब्यौरे भी होते हैं, पर ब्यौरे से ज्यादा फील होता है, उसमें डिटेल्स से ज्यादा फील होता है। ये जरूर है कि पिता में भी, और वो झूठ भी नहीं है, पिता में भी बहुत सारी चीजें खराब भी हो सकती हैं, वो भी आ सकती है कविता में, जिसको पितृसत्तात्मकता कहते हैं। पिता कई बार विवश भी होते हैं, अपनी विवशता में भी गुंजलक में फंसे हुए समाज के उस घेरे में रह के, और हो सकता है कई छोटी छोटी ज्यादतियां भी करते हैं बेटियों को, और इसलिए भी कि भाई समाज ऐसा है, वो उसकी अपनी असुरक्षा भी है, पिता की अपनी इंसिक्योरिटी भी है, उस इंसिक्योरिटी से। तो बहुत अच्छी सारी अच्छी बातें मीनाक्षी ने कही। बिल्कुल निश्चित रूप से मीनाक्षी के पापा में, पिता में बहुत अच्छी चीजें, थोड़ी बहुत अगर खराब चीजें एक आधी पंक्ति में आ जाती तो कोई बड़ा गुनाह नहीं आ जाती। और हालांकि वो मुझे पता है वो इतने ही प्यार से कविता में उतने ही प्यार से वो, जिसको हम कहते हैं कि जैसे आप पिता से जिद भी करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो आप कविता के पास भी वैसे ही जा सकते हैं, उतनी उस वैसी ही जिद के साथ आप कविता से भी कह सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए कि मेरे पापा मेरी बात नहीं मानते, तो वो भी आ सकती है, वो भी अपनापन है उसमें एक पापा के साथ की। एक थोड़ी सी मैं एक सुझाव दूँ एक पंक्ति में, और ये सबके काम की चीज भी है जब आप पोएट्री में काम कर रहे हैं। तो दुविधा रूपी समुद्र, तो जो दुविधा रूपी समुद्र कहने की जरूरत नहीं है, दुविधा के समुद्र, दुविधा के समुद्र, क्योंकि आप उसमें रूपक अलंकार इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब रूपक अलंकार हम इस्तेमाल करते हैं, ये पोएटिक डिवाइस, इस अलंकार को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर रूपी शब्द खराब, मतलब अशुद्धि माना जाएगा। तो जब आप कविता में लिखें तो आप एक रूपक की व्याख्या की तरह ना करें, उसको रूपक की तरह ही आने दें। तो ये आएगा दुविधा के समुद्र से। दुविधा बात तो वही होगी, दुविधा रूपी समुद्र, तो दुविधा का समुद्र है। दुविधा जो है अपने आप में समुद्र ही है, तो रूपी कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो आप अपने टीचर्स को दिखाएंगे, अपने जो आपको लिटरेचर पढ़ाते हैं चाहे हिंदी अंग्रेजी, उनको दिखाएंगे भी, तो शायद वो भी आपको इस बात को बताएंगे। अगर नहीं बताते तो आप इधर कभी भी आ जाएं और यहाँ कहीं जब कहीं भी कविता छोड़ दें और हम लोगों में से कोई यहाँ आए
और इसमें देखें और आपको बताएं कि भाई इसमें ये चीज़ जो है थोड़ी सी इसको ऐसे किया जा सकता है कविता में। तो सुंदर कविता है, पिता पर सुंदर कविता के लिए बहुत मीनाक्षी, पिता एक आदर्श, क्योंकि आपके टाइटल में ही पिता आदर्श है, ही इज योर आइडियल. So it was beautiful. I also once wrote a very small poem on my father. I was never very happy with it because there's so much more you want to say about your father and you can't find the words because feelings are so strong, so thought interferes. That's what I felt there is in your poem also, because I saw you in your lines. I saw that struggle to pin it. And still not being able to pin it. So your poem did tell us that there's so much more you could have said about your father. So that's great. I also wanted to say what Sir has already said, this Duvida Rupi jarred, that line jarred. Sir has explained that you cannot over-explicate a metaphor, you just use a metaphor, so there's no need for explanation there. And that word also then increased the syllabic length of that particular line and broke the rhythm that you had picked up. So you could look at that. Another thing which talked about is patriarchy in society. And one line that you said, "Aansu ko dabata hai," it's really patriarchal. Yes, but men are conditioned in our society to be strong and brave and not emotional. And therefore our fathers hid their tears from us. And also because we rely so much on their strengths that they cannot show themselves as vulnerable, because that makes the whole family insecure. So we also put so much pressure on our fathers not to show their feelings, which is something that we understand. But we also, that's something that we hope will change one day, and that fathers will freely cry, and we will not be threatened by it, but that we will be with them at that moment of feeling, strong feeling. So I liked your point. It was very sweet. Thank you. Good morning, everyone. My name is Nitalika Islam, and the title of my poem is Wedlock. She was a princess then, now promoted to be a queen. A woman today still behaved like a teen. Her unsure heart, the wedlock announcement aimed at her with a dart. An hour of cathartic crime, and then bid her farewell with an unconvincing goodbye. A rebirth of unrehearsed designation. The indispensables deserted her at the station. She gulped the salty tears to veil the torment of detachment. Like the streamlets from the river, she left the unbridged serving as a fragment. Her heart couldn't outrace the threshold of those who offered a recliner when she swooped for a chair. She screamed for a candy, they proffered her a teddy bear. The unshed tears choked her heart. She swallowed the warm drops. The unpurged, tender feelings squeezed her gut. An impulsive thought of her unsung hero, her consort, came prancing by. Like the bile, pacified the acid. Swapped to a beaming smile. Weeping willow, a void. Hollow ache, a tingling stomach. Wrestling thoughts, furrowed brows. Gateway to a distinct world. Basking in the glow of uncertainty. Emotions like a tangled wall of blue. Similar love from unsimilar faces. Wreaked delight. A destined leg for every lady to be gifted, to be offered to the deserving. She unfettered the epitome of warmth, the world she was untrained for. She stepped on the inevitable glee, a gracious welcome and a consented free. She was enthroned, her holy feet enlightened, silence displeased by her gleaming presence. She purified the impurity, earth renovated to a paradise.
like a smile to a sorrowful face and a therapy to the depressed. God's proudest creation is a woman of values, a paragon of forgiveness, essence of ecstasy, incarnation of empathy, and the personification of divinity. Thank you. एक तो भाषा और जो शिल्प था वो सुंदर है कविता, और बोलने का अंदाज भी सुंदर है। मुझे जब मैं यहाँ इस तरफ बैठा तो मुझे हैरानी भी हुई, और मिताली की इस कविता को पढ़ते हुए मुझे ये सब बात गहराई से महसूस हुई कि जितने भी बच्चे यहाँ कविता के साथ बैठे हैं सारी लड़कियाँ हैं, सारी लड़कियाँ हैं, मतलब लड़का कोई भी नहीं, नॉट ए सिंगल बॉय, सारी लड़की। तो खैर वो एक स्त्री को और बहुत टेंडरली आपने उसको अपनी कविता में समेटा, लेकिन फिर से थोड़ी सी एक कंडीशनिंग भी हो जाती है कि जैसे पिता को ऐसे ही होना चाहिए तो स्त्री को ऐसे ही होना चाहिए, तो पिता को भी वैसे होना चाहिए और स्त्री वैसी हो तो संसार के लिए बहुत शुभ भी है, अच्छा भी है। लेकिन स्त्री को भी मनुष्य होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में, वो उसके लिए वो सजा ना हो जाए, उसकी जो काइंड हार्टेड है, या वो उसके अंदर जो दया का भाव है, करुणा का भाव है, वो दया करुणा से भरी रहे और शोषण का शिकार हो जाए और सारी चीज़ें। तो हालांकि बहुत बड़े गुण है ये, और इसके लिए मुझे लगता है कि पुरुष को जो है कम से कम बहुत धन्यवादी भी होना चाहिए इस दुनिया को सुंदर बनाने में। तो हम माँ को ही देखते हैं उसकी जगह, या फिर वो कई रूपों में होती है, तो वो उसके बहुत उदात्त गुण हैं, लेकिन वो उसके उदात्त गुण उसके मनुष्य होने की जो उसकी गरिमा है, उसके मनुष्य होने का जो जीवन है, उसके लिए सजा ना बने। ये एक आकांक्षा है जो मैं वैसे ही शेयर करना चाह रहा था कविता के साथ। आप सब लड़कियां ही हैं यहाँ, तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि ज़्यादा करुणा से, ज़्यादा उससे भरे हुए या भावनाओं से भरी हुई स्त्री जीवन ज़्यादा उससे भरा हुआ है, लड़का एक भी नहीं है। हालांकि लड़के भी कविताएं लिख रहे हैं, तो पता नहीं वो आप लोगों ने उनको बताया नहीं कि वो भी आ जाती कविता, वो भी डिफरेंट व्यू लेकर के आता है, तो सुंदर है। वो मैंने आते ही नोटिस किया that there was no, so I thought आप शायद कविता पढ़ेंगे। All right, Mitali, your poem was about a princess turned to a queen. So we are looking at a very important milestone in a woman's life, which is marriage, and the adjustments that a girl has to make as she turns woman. So you brought that out nicely, especially with the butterflies in the stomach and the bile and the acid and the candy and the teddy bear. You got them all there, and so you're upholding traditional values for women. A woman with values is beautiful, something like that, to that effect you said. But you're also looking at modernity. You're also looking at the images that you're using are from the contemporary world. Yeah. So the queen then itself is metaphorical. The princess is also metaphorical. Maybe you can work on your metaphors a little bit more and see that there is no incongruity in the metaphors that are used within the lines. Even though I know what you're doing, you're bringing those two aspects together. Yeah, so our tradition, our lineage, our social, cultural heritage that we have, and our traditional roles, plus placing them in the contemporary and the modern. So, yeah, it's a very promising poem. So perhaps you would look at it again, work on it a little bit more. But this transition is something that would be at the back of every young girl's mind. Yes, even as you're all are in college or you all are
looking towards the future, because marriage is such a huge, big thing in human society, and especially so in Indian society, that girls right from childhood are conditioned and trained so that once they move to being queens rather than princesses, that this is what you will get, some good and some not so good, and that not so good has to be negotiated, which I could see clearly in your poem, even though you didn't mention it so clearly. And also you talked about the social role that is there. So everybody is around, everybody is watching her, and as she steps in, because of her lovely personality and personhood, that you use that line, that she purified everything. Yeah. So, which is amazing if you can do that just by being you. That people feel that they are in a rarefied kind of an atmosphere. So you have a very pleasing, very positive kind of a personality, and you add to the household into which you have gone. But there's nothing much about the household into which you have gone. So it is about you as a person, or the queen in this case, वो जायजा ले रही है ना, वो जायजा ले रही है कहाँ वो पहुंची है, and she's come with all goodness, and she's come with all openness, and hoping to contribute to the happiness of this place. So I think that's a very promising. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. So, my name is Sneha Raghir, and I'll be reciting a short poem that I wrote on how it felt like. It felt like nothing was there. Everything was so unclear. My heart was beating so fast. The thoughts of everything going apart. Those shivering hands, watery eyes. A burst of thoughts and making scenarios and a lot of plots. That feeling of guilt, rethinking of the things that I once did. Where did everything go so wrong? I don't think that I'm that strong. I think it's a trap of your own thoughts, thoughts that are caught in your mind, but you need to put them behind. So calm yourself down and look around. The world is not that bad. Don't feel so sad. So take a deep breath. Everything will be fine. It's just not the right time. It's just not the right time. नेहा स्नेहा स्नेहा आपकी कविता भी द्वंद्व की कविता थी, फिलोसॉफी की कविता है, फील की कविता है, थॉट की कविता है, और जिस नोट पे खत्म होती है वो बहुत सुखद है कि जितना भी कंफ्यूजन हो, जितना भी द्वंद्व हो इधर, लेकिन समय के उस समय ही वो द्वंद्व होता है, समय के आर पार द्वंद्व छंटता है, और अगर उस राइट टाइम पे या उसके बाद उसको रीथिंक करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो इतना ज़्यादा जीवन जटिल है नहीं जितना हम अपने द्वंद्वों में उसको जीते हुए जीवन को जटिल बनाते हैं। तो छोटी सी कविता, और अपने भीतर के जो वैचारिक द्वंद्व है उससे निकली हुई बताएं। Thank you, sir. Sneha, it was a beautiful short poem, full of positivity at the end. So you ended at a positive note, which is good. You talked about guilt, and guilt is a very complex emotion, and it can really overwhelm you. And I saw as your lines went on that you do comprehend that it can be very complex. It can trap you. That's the word that you used. It's an excellent word that you used, yeah, because you can get trapped into your own guilt and into your own complexes and your own dark thoughts, and then guilt is about something that happened in the past. So when the past has a shadow which is longer than your present, it completely overwhelms you. And you were able to bring that out in your poem. And then to exhort people like Varahi and others, all of us, that what's over is over, and we need to get over it, and in its own time, things will sort themselves out.
which is not to say that what you've done in the past can be undone, which is a very good thing that you did not give any excuses. Okay, I've done something wrong and I have the guilt. But then you can live with that. Which takes us to John Keats. No? He talks about negative capability and he talks about being able to live with contradictions. And therefore, you can feel guilt and at the same time, you can wait or bide your time till things may not get sorted, but they will at least be behind you. And that you can put down the burden and put down the baggage and then continue forward. That's love. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Shreya Thakur, and I'll be reciting two poems. One is in Hindi and one is in English. So the title for my Hindi poem is कुछ आवाजें हैं और बातें हैं. कितनी आवाजें हैं ये लोग हैं बातें हैं. कितनी आवाजें हैं ये लोग हैं बातें हैं. न गीत है न शायर है न ही किताबें हैं. न गीत है न शायर है न ही किताबें हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हुआ करता था महफिल में. कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हुआ करता था महफिल में. न जाम है न हसीन कोई शाम. न बारिश है न ही याद उसका नाम. चलो पहचान छोड़कर देखते हैं. चलो पहचान छोड़कर देखते हैं. आज नहीं तो कल नजरों से शुरुआत करते हैं. जमाना समंदर की गहराई नहीं समझता. कि जमाना समंदर की गहराई नहीं समझता. इसलिए चलो चेहरों से ही मुलाकात करके देखते हैं. जरा गौर करिएगा. मेरे साथ तुम भी दुआ करो. कि मेरे साथ तुम भी दुआ करो. यूं किसी के हक में बुरा ना हो. भूल जाते हैं मंजर कई राह में चलते ही. भूल जाते हैं मंजर कई राह में चलते ही. गुमराह तो वे हैं जो बिस्तर से निकलते ही नहीं. अब तो सपने आजाद हैं तुम्हारे. कि अब तो सपने आजाद हैं तुम्हारे. उड़ान दो मिसाल दो. पहली बार लगा था कि अंधेरे में आंखें बोलती हैं. पहली बार लगा था कि अंधेरे में आंखें बोलती हैं. एक घड़ी कई राज खोलती हैं. अब जश्न है रात है और एहसास भी. कि अब जश्न है रात है और एहसास भी. ए दिल खुश रहे दरकार याद बह रात की. अब गीत हैं शायर हैं किताबें भी. अब गीत हैं शायर हैं किताबें भी. आवाजें हैं लोग हैं और बातें भी. The next poem is in English. She's not German. She's Kali. Innocence and mischievousness sparkles at your age, yet the world fear from your reach. Big mansions have big secrets. What was the secret she holds within her? The secret she buried in her lies. She ate flesh, she kills men. The world calls her a demon. Even her laugh can be echoed from the heaven. Divinity clothed in her existence, given life to bring the tempest, plunged into the sea of rarest. Every creation reminds you of the Creator. Every creation reminds you of the Creator, starting from the protagonist of the real world theater. Introducing the she-demon from Bulbul. The universe yearns for her flame, the world has to burn, searching a few pearls of tears, regret, and shame. The world rejects all your sin. The world rejects all your sin, wants you with the power and the will. The girl made a question. The girl made a question. Isn't wine prohibited here? She replied, it's not what enters men's mouths that's evil. It's what comes out of their mouth that is. I found the reply in the book Alchemist. Yet the world continues portraying the sadist. Once asked by the girl, have you seen the she-demon? Her answer shocks the men. She's not demon. She's a goddess, the goddess Kali. In her feet we fall your heaven. She's a goddess, the goddess Kali. पहली जो कविता थी श्रेया
तो वो कुछ गज़ल, नज्म और कविता के काफ़ी निकट चीज़ें हैं। इस उम्र में गज़ल अट्रैक्ट करती है सबको, गज़ल। लेकिन आप बच्चों को, क्योंकि सब चलो पोइट्री में चहलकदमी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तो थोड़ी सी बात मैं ये करूँ, गज़ल को इतनी अच्छी पोइट्री नहीं माना जा रहा है। सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, उर्दू की बात वर्ल्ड पोइट्री में भी देखी है। गज़ल को पॉपुलर पोइट्री माना जाता है, बहुत गंभीर पोइट्री नहीं माना जा रहा है। बहुत सारी पत्रिकाएं गज़ल को छापना भी पसंद नहीं करती है। सोचना पड़ेगा क्यों, इतनी पॉपुलर चीज़, इतनी ज़्यादा लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, और फिर भी जो बड़े गंभीर लोग हैं वो नागमों को सिकोड़ते हैं गज़ल से। उसके कारण है, अकारण नहीं है। थोड़ी सी बात, ऐसी बात करूँगा इस नज़्म के बारे में। गज़ल जो होती है इस उम्र में बहुत आती है हमारे पास, गज़ल शेर ये आते हैं, लेकिन ये चमत्कार तो करती है, लेकिन दूसरे तीसरे पार्ट में मर जाती है। जैसे आप कोई गज़ल पढ़ते हैं या मंचीय कविताएं पढ़ते हैं, बहुत सारी मंच के जो बोली जाती हैं, वो इतने ज़्यादा कई बार इतनी अच्छी लगती है हमें सुनते हुए। हम सोचते हैं अरे ये तो अंतिम सत्य संसार का बोल रहा है आदमी, कुमार विश्वास कविता बोल रहा है, इससे अच्छी तो कोई कविता हो ही नहीं सकती, इतनी सुंदर कविता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विश्व साहित्य में अच्छी सी से पूछें, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि उर्दू की जो खास करके गज़ल है वो पोइट्री के हिसाब से काफी पीछे है। तो इसके कारण एक तो वो नाउड बहुत होती है, नाउड बहुत होती है, और चमत्कार बहुत करती है। चमत्कार करेगी, एकदम से आपके दिमाग में चढ़ के बोलेगी, और दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। दोबारा पढ़ेंगे आप, अच्छी पोइट्री जो है उसमें आप दूसरी तीसरी बार पहुंचेंगे, उसके बाद जाएंगे उसमें। लेकिन बहुत सारी गज़लें ऐसी है जो दूसरे पार्ट में जिंदा ही नहीं रहती है, अरे ये तो पढ़ लिया था, ये फिर रिपीट हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये जो मंचीय कविताएं होती थी तो ये दरबारी किस्म का इसका तामझाम होता था। वाहवाही तो बहुत होती थी, लेकिन वाहवाही ही कविताएं नहीं होती। जैसे फेसबुक और दूसरी चीज़ों पे सिर्फ लाइक ही अच्छी पोइट्री का पैरामीटर नहीं हो सकता है कविता का। ऐसी गज़लों में भी वाहवाही बहुत हो गई तो वो उसका पैरामीटर नहीं कि वो बहुत ही अच्छी, जिसको ज़्यादा वाहवाही होगी। कविता वो भी है जो वाहवाही भरना करवाए आपको, जब आप कविता पढ़ के हटें। रघुवीर सहाय कहते हैं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जो कविता पढ़ करके निकलूँ यहाँ से तो वाहवाही हो, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कविता पढ़ करके यहाँ से हटूँ तो सब साइलेंट हो जाएं, विचार में डूब जाए, सोचने में डूब जाए। कविता मुझे नहीं चाहिए वाहवाही, मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं ये इसको थोड़ा ऑफ बीट टाइप में इस गज़ल के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये गज़लें आप लोगों के पास बहुत तीव्रता से आती हैं इस उम्र में। आपको ये देखना है, ये छंटनी करनी है कि गज़लों के साथ में कितना धींगा मुश्ती करूं, और उसमें भी गज़लें, अब इतनी सारी गज़लें आ रही है, इतने सारे शेर आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक शेर अभी भी गालिब को जब हम पढ़ते हैं गज़लों में तो गालिब से आगे बहुत सारी गज़लें आपको मिलती नहीं है जाती हुई, गालिब से पीछे की गज़लें। गालिब को हम क्यों याद करते हैं जब गज़लों की बात आती है? वो बहुत ऊंची पोइट्री है, उसमें उसके बहुत ज्यादा गहरे अर्थ हैं, और कितने सैकड़ों साल पहले वो पोइट है, वो उर्दू का। तो अगर आपने गज़ल में जाना है तो आपको गालिब आपके सामने बैठा है, चुनौती है, वो चैलेंज है। देखो भाई, ये तो मैं लिख चुका हूँ इतने 100 साल पहले, इससे आगे तो कुछ लिखो। और भी है, सिर्फ गालिब ही। उसके बाद हिंदी की अगर हम बात करें, दुष्यंत कुमार की गज़लें जिन लोगों ने डिक्लेमेशन वगैरह कोट करते हैं बहुत जगहों पे, है ना। तो वो जो शेर है वो भी आपके पास चुनौती की तरह बैठे हुए हैं, है ना।
या अदम गौंडवी एक शेर शायर है, अदम गौंडवी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। वो बड़ी तल्ख गज़लें लिखता है आज की सच्चाई की। तो गज़लों में बहुत सारी चीज़ें बड़ी रोमानियत भरी होती हैं, रोमांटिसिज्म के तहत आती हैं। तो इस स्टेज पे वो रोमांटिसिज्म बहुत अट्रैक्ट करती है, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की और उसके जो खतरे हैं उनको जानना समझना भी ज़रूरी है। बाकी ये ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी मैडम। Thank you, sir. Okay. Well, sir has already talked about the Urdu poem that you read, which is sweet in its very basic feelings. Yes? All young people feel like that. And what is youth without romance? Nothing. So I leave it there. But one line that caught my attention was, those who do not venture are the ones who have lost the way. जो बिस्तरे में बैठे रहते वो गुमराह हैं. It's a good line. There's meaning there, there's exhortation there, it's a very inspiring line, especially for young people. Get out there, do your thing. So I didn't like that, but I want to talk more about Kali, she demon or goddess, and I can see that you are striving to bring the goddess and the she demon aspect into a binary, into a contrast, and see that there is a darkness and there is a fearsomeness about Kali, but she's a revered goddess for us, and the Navratras will soon be here, and we will be worshipping the goddess in all her different manifestations. And she may eat flesh and she may drink wine, or it may be offered to her. You pick that up line. It's not that defines you that goes in, but what comes out, which is from the Bible, which alchemist picks up. It's not a new idea. It's a very old idea. But in today's times, it's very relevant because there is so much talk about our lifestyles being relooked at. And there is this huge global idea on food which is undergoing a change. So whether it's veganism or vegetarianism or vegetarianism or whether you're non-vegetarian or whatever, and a whole lot of ethics and moralities are now being attached to, once again, being attached to food, so that you're almost afraid to eat because you don't know what might offend somebody. Food has become central to discussions about morality. I would have never thought so, that in the 21st century it would happen, but it has. And there I think your poem has a lot of relevance. And from the Princess Queen, we are now moving to the ferocious goddess, yes? Kali, a manifestation of power, a manifestation of, destruction, if you like, punishment, if you like, set things right, because she's not somebody who will look at your guilt and say, okay, never mind, you can deal with your guilt. She's the one who's off with your head, and you can think about guilt once your head is severed, and you'll have plenty of lifetimes to deal with your guilt. So that power I could feel in your poem. The only thing that I would like to suggest is that look at the coherence in your poem, the internal coherence of ideas and metaphors. For example, the bulbul line did not strike as it should have struck, because bulbul and the she demon and the goddess, those are the three major ones that came through. So she demon, you did very well. The goddess, of course, is there, but the bulbul was left by the wayside in the bushes. Yeah, so maybe you could. When we write poetry, we are actually looking at some very prominent ideas, and then metaphors or similes or whatever you want, images you want to use. So a little bit on coherence of the poem is very promising. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Unatishri, and I'm going to recite my poem on the topic the moon.
Under the same sky, below the different roof, she casts for you, smiling. You get out of her sight, driving her through. Hidden beside the clouds, she caught you when, glimmering, blushing, hoping, you say, let's play this again. Finding peace in your beauty and ecstasy in your scars, you tell her you are here when her mind is at war. Notwithstanding the fact you are too far. In the dark time here, she bewildered in her thoughts, you lit her up when the place is bizarre. There's a reason she romanticizes you. You neither asks her question nor starts judging. You give her a gift which most humans can't, that is, listening. She finds a comfort, a home in you. When things go wrong, she waits for you. You saw her in every patch, giving her hope, standing by her side in every life story. Just like you, she goes through phases of light, of dark, and though you may not always appear, you are always home, living your perfect dream. आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है उसमें कविताओं पर बहुत पोस्टमार्टम और ऐसे और हर तरह के बड़े जिसको बोलते हैं ना बड़ा ऐसे टिप्पणियाँ हो रही हैं कि जिसके लिए स्वाभाविक है अभी शुरुआत में जो बच्चे लिख रहे हैं वो उम्मीद भी नहीं रखते कि इतनी बेदर्दी से उनकी कविताओं का पोस्टमार्टम किया जाए काट पीट तो कविताएं या तो होती हैं या नहीं होती हैं होने और नहीं होने के बीच में तो मुझे बस ये लगा कि सुनना जो है वो एक बहुत बड़ा पुरस्कार है इस कविता में आजकल सुनता कोई नहीं है बोलता ही जाता है तो यहाँ एक लाइन सबसे खूबसूरत आई सुनना जो है वो एक बड़ा पुरस्कार है आज हम सुनते नहीं बस बोलते हैं और इसको आप लोग ऐसे मत लें कि इतनी ज्यादा हम लोगों को पता नहीं वो हो रहा है कविताओं का पोस्टमार्टम हो रहा है ये जस्ट ये है कि आप उसको ले भी सकते हैं उसमें से तो ये थोड़ा सा करेक्शन आप लोगों and you can blame Vanna for that because she told us हमें आपको बताना of course I'm not really a poet so it's just we are sitting here as teachers no so we are actually in a class in a master class not probably a simple class and we're discussing poems and I'm sure after this the poets themselves can also have a discussion amongst themselves about what they like and what they don't like so bear with us teachers we are old school this particular poem about the moon I really like the line finding peace in your beauty and ecstasy in your scars. That was a very nice line. It stood out for me. It's a nice poem because you're looking at the moon, and also you are somewhere linking it to a woman's life, a woman in her home. बड़ा क्लीशे मेटाफर है महिला चांद की तरह होती है प्रेयसी चांद की तरह होती है चंद्रयान के और कुछ नहीं हो रहा so what you're saying but Chandrayaan is actual space and this moon is the romantic space and the Purnima का चांद वो darkness वाली poem में वो अमावस का चांद होगी but you played with it really, really well. You worked out your feelings nicely. The only thing that I would like to say, and this is not only to you, Navishri, but to everybody, poetry does not mean that you use wrong grammar. You know, you play with words, you play with syntax, you do things, but बहुत सारे लोग आजकल ये सोचते हैं कि grammar does not apply to poetry, but it does. तो हाँ है ना सर तो अगर आप तोड़ेंगे किसी चीज को डिफरेंटली पेश करेंगे but it should not jar if it is used in a metaphorical way or with a simile or with something that comes out as intense but it should not appear wrong so you've read so many different poets जिसमें grammar को तोड़ा गया है grammar के rules को तोड़ा गया लेकिन they make sense there Yeah, so this is for everybody. It's not only for Navishri, it's for everybody. For example, the word romanticize
romanticizes is what you should have had there. So this tense and the subject verb agreement needs to be kept there. Otherwise, the line becomes meaningless because the grammatical license that you took actually jars away from the meaning. So be careful about that. But otherwise, I like your poem. I liked your poem. Well done. Good afternoon, everyone. My name is Ridhima Munjal, and the title of my poem is The Rain We Leave Behind. The sky is a dream split open, drenched with the strokes of our destiny. I hear the distant and muffled thunder, like life is calling out my name, telling me this is not the end. You still have some time left. The wind chokes on cracked vows and hollow wishes. There is a prayer that could not reach God. It hangs in the air, yearning to sink into the heart from whom it bleeds. Raindrops collapse over us, with a hymn tucked inside them. I catch one in my hand, and it asks, "What have you become since the last time it rained?" I answer, "What can we even keep and hold on to? What can I love even after burning away when my soul has even abandoned me?" Perhaps then we know how we are tethered to this life, clinging to see some light long after our shadows are even buried. अभी में भी सुंदर जो मैं कह रहा था कि कभी कभार जिज्ञासाएं होती हैं चीज़ों को देखने का और प्रकृति को भी देखने का और उसके साथ अपने इमोशंस को रिलेट करने का अद्भुत कौशल होता है कवि में। तो वो कौशल इस कविता में है कि अपनी भावनाएं बारिश की और बारिश हो रही है और पहली बारिश से अब की बारिश तक कहाँ तक मैंने जितना बदलाव खुद में किया है, ये सारी जो इमोशंस हैं ये रिलेट कर रहे हैं प्रकृति की। तो ये जो जिज्ञासाएं हैं, छोटी छोटी जिज्ञासाएं कवि के पास होनी चाहिए, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने की और अपनी जो अंदर जो घटित हो रहा है उसको प्रकृति की तमाम चीज़ें जो घटित हो रही है उसके साथ रिलेट करनी। तो ये चीज़ मेरी इसमें खुश होती है। I really liked your poem, Ridhima. The title itself was very suggestive and beautiful, The Rain We Leave Behind. It makes you think whether it is the past season's rain or whether it is talking about once we pass. Yeah, so I thought it was very beautifully done. You used some very interesting images. Raindrops collapse over us with a hymn tucked inside there. A very powerful line. You are a very, very promising poet, and I hope to read more of your poetry. I think you worked out the images as well as a couple of metaphors very nicely. And the idea that when it rains, life is calling out to you. So you brought that aspect of rejuvenation, reinvigoration, and the rain as an elemental thing, but also rain as a refreshing of the soul. You managed to bring them out together excellently. So yeah, I like your poem. I'd like to take it with me. Thank you. I'll take pictures of it. Good afternoon, sir. So, my name is Yashasvi Sharma and I'm reciting a poem, Taking Things In. So, take things in, process them slow. With thoughts very deep, I see people weep. Weep out the darkest secrets that within they keep. Are we so shallow to understand the sorrow of people, the dark side that follows? The suffering from people borrow. Taking things in, processing them slow. Why is it tough to make it win-win and let things flow? Why is it tough simply just to know on people what people throw? Thank you. छोटी सी कविता अच्छी
अच्छी कविता। और कवि तो करता ही यही है कि बाहर से चीज़ों को लेता है, दूसरों के भी दुखों को लेता है, अंदर उसको प्रोसेस करता है और सारी दुनिया का की परेशानियां लेकर के कविता तो भले ही लिख लेता है लेकिन अपना भी सत्यानाश करता ही है। तो ये सब, और ये मनुष्य होने का पैमाना है, ये कि हम दूसरों बाहर से चीज़ों को भी, दुखों को भी लेते हैं, चाहे वो जिसको हम बोलते हैं प्रकाया प्रवेश की तरह से, और फिर उसको भीतर स्वाभाविक उसको हम संश्लिष्ट ढंग से बाहर लाते हैं। तो सुंदर कवि। I agree with sir. It was a very nice, sweet, sensitive poem, and the sensitivity towards others. It's a poem of advice, really, and we will take your advice. It's good advice, and you used appropriate words, and there was no yearning to extend the poem and add thoughts or other facts which normally young people will do. Yeah? So it was crisp. It was very nice. Thank you. Good afternoon, my name is Shruti and I am going to recite a poem, The Awakening. Far was distance between us, as in the sun from the earth. So crestfallen was I, until I was blessed. Like a dry, pale leaf of a tree, I fell. Not once, over and over again, before we met. Brailed by the pain of longingness, I broke down, became sorry. But your life, giving light, made me rejoice. You embraced me each dawn and bloomed like a bashful woman. After yearning for years, and blessed as I found you in disguise, your rays suffused me with life. I gushed with meaning and sound. Is fall akin to death? A fallen leaf, dead and decayed, becomes the source of new life. So up I woke, eager to stand and pose. Like the sun, you arrived, like a sunflower I bloomed. Silently drinking your warmth and shine, I became an albedo of your goodness. You showered me with light, I bowed before you every twilight. I sought and found a message so deep, like a sunflower is inane without the sun. Such is my connection with you. Your eternal love remains embedded deep in my heart and soul, nourishing me each day, each moment in the certain yet vivid paradigm of life. With your every caress, I rise, drinking ecstasy from your serene eyes. Thank you. हिंदी में कविता का नाम है मेरे अधूरेपन को वजह मिल गई। अधूरा सा दिन बेरंग सा आसमान, अधूरा सा दिन बेरंग सा आसमान, न थी खुशबू त्वचा थी न, सावन ने हौले हौले दिखाए अपने आंखों में छाए मेघ, तेज के समान आंखें लगी नूर दिखाने, चंद घड़ी में अश्रु के समान बरसे मेरे अधूरेपन को मिल गई वजह, आशा रूपी किरणों ने किया चमत्कार, चारों ओर उत्साह रूपी लालिमा छा गई, वसुधा की शोभा को चार चांद लगा गए, रोम रोम कण कण को मानो जीवन मिल गया, किसान की खुशी का ठिकाना न रहा और बच्चों को दुनिया से कुछ लेना बचा, मिट्टी की खुशबू साथ रंग मुखा, बूंदों की आवाज से मानो सब सजीव हो गया, पल भर में वसुधा का रूप बदल गया, जब आंखों के आगे कोहरा छा गया, पेड़ लगे झूमने चहचहाने, जब पंछी आए
दिया जलाने मेरे उत्साह के समान नदी नालियों का स्तर भी बढ़ गया। बरसते मेघों ने मेरे हृदय को उल्लास और रोमांच की भांति भव्य कर दिया। धन्यवाद। श्रुति की कविता में जो भाषा का प्रवाह है वो मुझे खास तौर पर अच्छा लगा। कविता की ये एक अपेक्षा भी होती है कि अगर वो आप उसको मुक्त छंद में भी लिख रहे हैं तो उसका एक आंतरिक प्रवाह बनना चाहिए, जो इसमें अंग्रेजी की भी और हिंदी की भी दोनों जो कविताएं थी उसमें जो फ्लो था, प्रवाह था, आंतरिक प्रवाह था, वो खूबसूरत था। फिर से वही बात आ गई कि रूपी कहने की जरूरत नहीं है वहाँ, वो के की लगा करके भी हो जाती है बात। और अगर वो रूपी के रूप में आता है तो वो एक त्रुटि की तरह होता है कविता में। वो अच्छी कविता में त्रुटि की तरह होता है। आप उसको रूपक जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो का के लगा करके हो जाता है, वो उसमें वो ज्यादा अच्छा भी लगता है बजाय उसमें रूपी कहना। तो ये अच्छा और पढ़ने का भी अच्छा अंदाज है, लेकिन सिर्फ पढ़ने भर का अंदाज नहीं, वो भाषा का भी प्रवाह है जो आकर्षक है। I agree with sir. Shruti, you have the poem has an innate rhythm to it, so it has a nice flow, and you have felicity of language. You can work with it very well. That was very impressive. You would make a performance beautiful. Yeah? So many of you really are very good on the stage. But like sir said, poetry should not be limited to reading out or performing, because poetry should eventually lead to repose and thought. And your poems do lead to that. I like the idea of the naturalness of the love. So you're like a fallen leaf, and the sun and the sunflower, all of that. Love is something that we sort of idealize, and we think it's an otherworldly experience. But love is something that is very functional, a very everyday kind of an affair. And I like what you did, so because this love, very passionate, very intense, but it is part of the rhythm of life. And so it becomes natural in that way. So I think you brought that out very well. I like the look. Thank you. Good morning, everyone. My name is Abharika Katkar. Abharika Katkar. So the title of my poem is King Symphony. To pen down words, a beautiful art, expressing thoughts straight from the heart. Writing brings clarity, helps us see, and unleashes creativity, sets us free. Through words we share stories untold, capture emotions, memories unfold. Writing brings healing, a soothing balm, a way to connect, to being calm. So grab a pen, let your thoughts flow. Write your dreams, let your imagination flow. Ink on paper, a world to create. Writing is magic, don't hesitate. Thank you. अभारिका ने कह ही दिया, बता ही दिया अपनी कविता में कि लिखना क्यों जरूरी है और अभारिका क्यों लिखती है और हम सब भी क्यों लिखते हैं। तो सबके लिखने के लगभग यही कारण होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना और अपने दुखों को भी, बल्कि दूसरों उसको उसका एक जनरलाइजेशन भी करते हैं, साधारणीकरण। सिर्फ अपने दुख नहीं होते हैं, जब हम अपने दुख लिखे होते हैं तो वो अपने जैसों बहुतों के दुख के साथ रिलेट करते हैं। सुंदर। I liked your poem very much, Abharika. And your poem is the theme of the day, isn't it? So put your pen to paper and write, everybody. If nothing else, it brings you pleasure. It gives you a sense of having done something worthwhile. And it sorts out our thoughts. And you've done it very well.
I wonder which class you're in. First year? Okay. So it's a nice point for the youth, inspiring in the sense that all of us who have the writing bug, let the bug work its magic. That's it. It's nice. I like the rhythm of your poem. Thank you. Very good afternoon to one and all present here. The title of my poem is A Letter to. आपका My नाम name is Yuvika Singhi. युविका Yuvika. युविका And the title of my poem is A Letter to My Dear Earth. When my eyes saw the light for the very maiden time, you, my dear Earth, embraced me with the adore. When I was struggling to take my first step, you, my dear Earth, was serene and eager. Even your tears eared the soil on earth, provides water to the living soul, the extinguisher to the raging fire, and the cleanser for the evergreen groves. But when you smile, my dear Earth, you heal our wounds and make us feel even more jubilant than ever. Slowly, I'm seeing your smile fade away. Your tears are now tearing us apart. The glows are turning into flames. Innocent souls living there are vanishing, and the mankind turning their backs towards each other. Who is to be blamed for this unpardonable sins being committed on you? I am to be blamed. And along with me, all the living souls who yearned for so-called protection started to torment you. My dear Earth, your love made me stronger, and I can't even see your smile fade away like this. You protected me, aided me, and provided me with all comforts. Now it's my turn to protect you. The moon fights against the vicious asteroids, rotating around you and protecting you. I might not be as sturdy and alluring as the moon, but for you, my dear Earth, I'll find every kind of remedies to heal you and make you smile. तो युविका की ये कविता तो ज़्यादा रिलेवेंट हो गई है, ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है, जैसे आजकल जो घटित हुआ पिछले दिनों। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को कवियों ने, बहुत सारे कवियों ने अपनी कविताओं में इस्तेमाल किया है और बड़ी जिसको हम कहते हैं कि कृतज्ञता के साथ किया है। तो ये भी एक बड़ी कृतज्ञता के साथ पृथ्वी को अपनी कविता में, और हमारी तो चलो अब तो खैर इस बात को बार बार कहना भी बड़ा अजीब सा लगता है कि हम अपने देश को या अपनी मिट्टी को हम माँ की तरह कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। ये तो खैर एक बड़ा पॉलिटिकल सा एक नारा सा हो गया है। अदरवाइज ये फील भी है हम लोगों का कि हम लोग पृथ्वी को, मिट्टी को, ज़मीन को माँ के साथ थोड़ा सा उतना ही सम्मान देते हैं। ये ज़रूर है कि जो आज की हमारी अपेक्षाएं हैं, आज की जो हमारी हवस है, तो उसने बहुत ज़्यादा घाव पृथ्वी को दिए हैं, जिसका नतीजा भी हमारे सामने ही है, आसपास ही। तो ये बहुत जिसको हम कहते हैं बहुत सामयिक विषय भी है। और जल जंगल ज़मीन का जो मुद्दा है आज के दौर में विश्व का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको भी एड्रेस करती है, उसकी चिंता को भी कविता संबोधित करती है। तो पृथ्वी को बहुत सारे कवियों ने बहुत संवेदनशीलता के साथ अपनी कविताओं में बड़ी कृतज्ञता के साथ उस पर कविताएं लिखी हैं। तो उसी श्रृंखला की ये कविता है। Thank you, sir. Yuvika, like sir said, your poem is germane to our times. I wonder when you wrote it. Recently? Yes. Recently, okay, good. So maybe whatever happened in Himachal in the past month may have had an impact on you. Yeah, it must have. That's what poetry is all about, my young poets, because something does move us, no, and shakes us up, and that's a good spot from where poetry comes. You are very sensitive to the environment, as we can see, towards the planet, and interestingly, even though the poem is in English, and now we recognize English as a foreign language, but the idea is very Indian, and like Sir said, it is about Hakeem Mom,
And so you're equating the planet not with just a planet or a place that we inhabit, but it's motherly. So you brought out without using the word mother, you have brought out the caring and nurturing that the earth gives to us. And even further, I thought that your poem has a tinge of ethicality, because you take responsibility and you say it begins with me. So it is I and other people like me who have brought about this degradation in the environment. So this is a very nice poem. Good, the idea is excellent. Maybe you'll polish it up a bit, and you must publish it. Thank you. शुभ दोपहर। तो आज मैं श्रेया नड्डा आप सभी के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी। आइए शुरू करते हैं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कान्हा तुम हो ना। कान्हा तुम हो ना, कुछ तो कहो ना, तुम तो हो ना। हमने दूसरों से नहीं पर तुमसे दिल लगाया है, तुम्हें ही अपनी रग रग में बसाया है। हमने तुम्हें ही अपना दोस्त बनाया है, हमने तुमसे ही तो दिल लगाया है। तुम मानो या ना मानो कान्हा, पर कुछ बात तो है जो हमने तुम्हें तुम्हारे दीवाने हो गए। प्यार करने के लिए तो बहुत लोग हैं हम, पर तुमसे दिल लगाना ही हमारे लिए काफी है। तुम तो सब जानते हो ना कान्हा। तो अपनी दूसरी कविता, उसका शीर्षक है मेरे पापा। बहुत गलत था मेरा ये सोचना कि मुझे पापा जैसा नहीं बनना। बहुत गलत था मेरा ये सोचना कि मुझे पापा जैसा नहीं बनना। आखिर यही तो है जो नहीं करती मैं प्लीज जग से बनना। आखिर क्यों ना फक्र हो मुझे उस इंसान पर, आखिर क्यों ना फक्र हो मुझे उस इंसान पर। एक चीज मांगो तो वो 10 ले आते, खुद दुखी होकर हमारी खुशियों में खुश हो जाते। समय की ना परवाह किए हमारे लिए कमाते, हमारी खुशियों में ही अपनी खुशियाँ भूल जाते। बहुत गलत था मेरा ये सोचना कि मुझे पापा जैसा नहीं बनना। अमीर लोग तो बहुत हैं हम, पर दिल से अमीर होना मैं और सीखती हूँ। अब बताओ मैं क्यों ना कहूँ कि मुझे पापा जैसा नहीं बनना। तो अब कहो कि मैं क्यों ना कहूँ कि मुझे पापा जैसा नहीं बनना। दो कविताएं। पहली कविता ऐसी जैसी होती है इसमें, और ठीक ठीक सी, अच्छी सी, रोमांटिसिज्म से ग्रस्त। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि गजलें ऐसी हमें लगती है कि बड़ी रोमांटिक सी लगती है, बड़ी अट्रैक्ट सी करती हैं, लेकिन रोमांटिसिज्म हमें बहुत ज़रूरी भी है। मैंने कहा कि रोमांटिसिज्म के बिना क्या है, जीवन भी नहीं है। लेकिन जो रोमांटिक आप बच्चे पढ़ रहे हो, तो रोमांटिक पोएट्रीज जो जितने भी हमारे रिवॉल्यूशनरी पोएट्स हुए हैं ना, उन्होंने सब ने रोमांटिक पोएट्री भी लिखी है। बड़ी मजे की बात है, बहुत मजे की बात है कि जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत अधिक रोमांटिक पोएट्री लिखी है। आप उसको पढ़ें, और उसमें और जो उर्दू के बहुत चलंत किस्म के शायर है, उसमें क्या फर्क है वो देखें। उसमें हमारे समय की चिंताएं, परेशानियां जाती हैं। वो जो प्रेम है, जो पाश के पास प्रेम आता है ना, पाश का नाम सुना है? पाश को पढ़ना, पाश की रोमांटिक पोएट्री को भी पढ़ना। पाश जो है पंजाबी के बहुत बड़े पोइट हुए हैं, हिंदी में भी ट्रांसलेशन है उनकी बहुत सारी अवेलेबल है, और श्रेया भी पढ़ेगी पाश को, की रोमांटिक पोएट्री भी पढ़ेगी। पढ़ें, देखें कि उसमें हमारे समय की जटिलताएं कैसे आती है, हमारे समय के डर, इनसिक्योरिटीज। आप बच्चे प्रेम पे बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। आपको पता है हरियाणा में प्रेम के लिए खाप पंचायतें वो सरेआम उस पर टांग देते हैं, दो
प्रेमी प्रेमिकाओं को पेड़ के नीचे टांग के मिलती है वो लाशें उनकी। ये भी आना चाहिए ना, ये हमारे समय का सच है। जो प्रेम इज नॉट दैट इजी, समाज में भी, अपने अंदर भी, अपने आप में भी उसकी जो चुनौतियां हैं, प्रेम करना आसान है कोई? ये थोड़ी है कि फिल्मी गाना गा लिया हमने। तो बहुत जरूरी है, प्रेम के बिना जीवन भी अधूरा है, नहीं होता। लेकिन वो जो उसकी जटिलताएं है ना आपकी, क्योंकि वो जो पोएट होता है वो एक तरफा नहीं देखता चीजों को, बचता नहीं है चीजों से, रोमांटिसाइज इस तरह से नहीं करता है कि प्रेम की मैं प्रेम कविताएं लिखता रहूं और जो हरियाणा में जो खाप पंचायतों के फतवे हैं वो जो पेड़ों में टांग देते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं को, उसको मैं भूल जाऊं। वो हमारे समय का कड़वा सच है। तो मेरे ख्याल वो वही नहीं है फतवे। वो जो फतवे वहां जारी होते हैं वहां वो प्रत्यक्ष रूप से टंगे हुए पाए जाते हैं। और हमारी जो सिविल सोसाइटीज हैं, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी समाज हैं, वहां पे वो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, वो अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं टंगे हुए होते हैं। लोग सीधे नहीं मार दिए जाते हैं, तो तसा तसा के मार दिए जाते हैं। वो भी है ना, तो आप पाश को भी पढ़ो तो ठीक है। वो कृष्ण भी है, कृष्ण प्रेम का प्रतीक भी है। और वो जब कृष्ण की बात करते हैं तो वो बहुत बड़ी फिलोसॉफी भी है, कृष्ण के प्रेम वाली फिलोसॉफी है। वो उसमें जो भक्ति काल है, हमारा भक्ति काल में जो कृष्ण वाली फिलोसॉफी है, वो भक्ति की फिलोसॉफी बहुत ऊंची चीजें हैं। उसके भी कई शेड्स हैं। जो कृष्ण के प्रेम की जो वो है उसकी भी कई शेड्स है। एक तो रीति काल वाली है और एक भक्ति काल वाली है। रीति काल वाला वो शेड है जिसमें वो बिल्कुल दैहिक स्तर का प्रेम है, और जो भक्ति काल वाला प्रेम है वो स्पिरिचुअलिटी वाला प्रेम है। वो डिफरेंट शेड्स हैं। वो बड़ी फिलोसॉफी है, उसको भी पढ़ें, जानें, संसार को देखें, समझें, जानें। उसके बाद आप प्रेम, और बिल्कुल प्रेम बहुत जरूरी है, नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम नहीं हो, लेकिन आप प्रेम के लिए पाश और दूसरे जो हमारे रिवोल्यूशनरी पोइट्स हैं उनकी पोइट्री भी पढ़ें प्रेम वाली। कितनी उसमें कितनी जटिलता के साथ प्रेम आता है, कितनी मुश्किल के साथ, और वो ट्रू है, वो सच्चा है। जो आपको ये आनंद बख्शी वाले गाने हैं वो आपको बहुत ज्यादा प्रेम की सही अनुभूति के पास नहीं पहुंचाएंगे। जो एक सच्चेपन के साथ प्रेम की बात कर रहा है वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से उसके पास पहुंचाता है। और दूसरी क्या कविता पढ़ी? पापा की फिर से बात हुई है। सारा अच्छा मेरी कविता में आए। और मैं फिर से बोलता हूँ, श्रेया ने अपने पापा से लड़ाई भी जरूर की होगी, जिद भी जरूर की होगी, उसकी भी कुछ लाइनें आ जाएंगे, मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं होता पापा। लड़ाई भी होती है, जिद भी तो करते हैं पापा से, चाहे ड्रेसेस पे, चाहे बोला कि भैया ये बड़ी बड़ी कान में जो डाली हुई है ऐसे मत पहनो, पापा ने ये भी कहा होगा, या ये जो तुम कर रहे हो ये मत करो। बहुत सारी चीजें पापा भी कहते हैं। वो उसी टोन में है ना जितने प्यार से आप पापा को एड्रेस कर रहे हैं कि पापा आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, फिर मुझे ऐसा क्यों कहते हो? वो कविता ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगी, ज्यादा आपकी लगेगी वो कविता। और ये जो जब हम सिर्फ आदर्शवादी ढंग से चीजों को देखते हैं तो वो अपनी तो है, लेकिन थोड़ा सा उसमें संतुलन कम होता है। एक तरफ ही मीठा 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 कह दिया, और जहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग चीजें हैं उससे बचा करके आप निकल गए। तो पापा उसे ये तो क्या है ही, पापा पे कम कविताएं लिखी गई। और पापा पे कविताएं कैसी तो शायद लिखी जाती थी बहुत, लेकिन पापा के जो बहुत रैशनली ढंग से, बहुत तार्किक ढंग से पापा को संबोधित करती हो, थोड़ा द्वंद्व भी हो उसमें, थोड़ा पापा के साथ थोड़ी जिदें भी हो, और पापा की प्रियोरिटी को भी कई, वो उसकी भी मजबूरियां हैं, उसकी जो कितनी सत्तात्मकता है उसकी मजबूरियां, उसको आप बहुत ज्यादा अगर निशंसता के साथ ना एड्रेस करें तो मानवता के साथ एड्रेस तो कर ही सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता बच्चों के पास। Thank you, sir. Good points for Shreya. When you started off with Kana Tum Hona, it kind of generated a curiosity to see how you will deal with that. But sir is very right, because
the tone of your poem had seeds of devotion. उसमें आग्रह था, उसमें भक्ति थी, but it was a very light-hearted bhakti, very light-hearted reaching out, yes, to Krishna. Like Sir said, Krishna comes in a package, and the philosophy of Krishna is very much part of his personality. So somewhere in your poem you needed to have that. So whenever you, in just the title of your poem, "Kana Tum Ho Na," तो हमें सबसे पहले तो मीरा की ही याद आ जाएगी. और मीरा की तरह अगर आप सांस ले रहे हो तो फिर वो इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाओगे, then it become a better poem. Yeah. When we look at मेरे पापा, you did say that मैं क्यों कहती थी कि मेरे पापा जैसा नहीं बनना. What sir was saying, उस लाइन में है वो चीज, but that idea was dropped. That क्यों नहीं बनना, that idea we didn't get throughout the poem. Yeah. So you did say कि मैं क्यों सोचती थी कि मुझे पापा जैसा नहीं बनना. That is the thesis that you gave out, and then you began to argue on it. However, the crux of the whole point therefore lay in why did you say कि तुम्हें उनकी तरह नहीं बनना है, whereas you're coming to the conclusion that you want to be like your dad and you like what your father represents. So that was missing. So if you could add that thought in your poem, it will make it a little better. They are very simple poems, they are very brief poems also. There is much to be said for brevity. I actually prefer small poems to very long, winded poems. They are romantic, there is feeling in it. Perhaps you would like to add some substance of thought to them, and we'd then like to hear them again. Thank you. Thank you all so much for reading your poetry. And now I'd like Sir to start with a couple of comments, general, about poetry and all, writing, and then ma'am can conclude. Right. तो कविता पे तो अगर बोलने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक कविता हमने जब पढ़ी उसके संदर्भ में जो बातें कही उसमें वो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं जो कविता को लेकर के ज़रूरी थी कही जानी. सिर्फ मुझे ये कहना है कि वो हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो कहते हैं कि परिचय प्रेम का प्रवर्तक होता है. परिचय प्रेम का प्रवर्तक है. प्रेम की बात करी थी तो वहां से चलेगी. तो कहने का मतलब है किसी भी चीज से, किसी शय से जब हम प्रेम करते हैं तो पहली शर्त है कि परिचय के माध्यम से हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, है ना. जब हम चाहे देखेंगे किसी को या परिचित होंगे, तो जब आपने अच्छी पोएम की तरफ जाना है, अच्छी कविता की तरफ जाना है, तो अच्छी कविता क्या है इससे आपका परिचय होना चाहिए. और अच्छी कविता के साथ आपका परिचय कैसे होगा, वो होगा जब आप बहुत सारी कविताएं पढ़ेंगे. और इस पे भी है, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी है, लेकिन कुछ अच्छी किताबें भी आप पढ़ेंगे, कुछ अच्छे कवियों को आप पढ़ेंगे. बहुत अच्छे आपके पास अच्छी कविताओं की आपके पास, जिसको हम कहते हैं कि अच्छी कविता आने की बहुत अच्छी संभावना है आपके पास है. बहुत अच्छी कविताएं आपने पढ़ी हैं, बधाई पात्र भी हैं आप लोग. तो जितनी अच्छी कविताओं को आप पढ़ेंगे उससे ये नहीं होगा कि आप कॉपी करोगे, उससे ये होगा अच्छी कविताएं आपको बताएंगी कि आप अपनी जो आपकी अनुभूतियां हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उनको आप कविता में कैसे ढाल सकते हैं. तो थोड़ा बहुत उसका जो बनावट है, उसका ढांचा है कविता का, वो कविताएं आपको सिखाएंगी कि सीधी सीधी बातें कम कविता होती है, और थोड़ी कविता की जो एक्सपेक्टेशन के साथ, कविता की अपेक्षाओं के साथ जब वो बात उस फॉर्मेट में, उस फॉर्म में ढलती है, तो वो कैसे बेटर कविता होती है, ज़्यादा अच्छी कविता होती है. एक तो ये कि आप अच्छी कविता से परिचय पाएं, अच्छी कविताएं आप पढ़ें,
अच्छा साहित्य पढ़ें। और कविता के लिए ये भी ज़रूरी है कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपको शिल्प का ज्ञान होना चाहिए, आपको जो पोएटिक टूल्स वगैरह इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको मनुष्य होना चाहिए और मनुष्य की तरह की आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए। बहुत उपदेशात्मक भी नहीं होनी चाहिए कि आप संत बन जाओ और उपदेश देना शुरू कर दो, वो भी अच्छी कविता नहीं है। और ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि भाई हम तो बहुत गए बीते ही है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो आप मनुष्य हो, मनुष्य के रूप में आपकी अनुभूतियां हैं बहुत सारी, और मनुष्य की गरिमा है आपके पास। आपके पास जो है, जो हृदय है, मनुष्य का जो फील है, वो दूसरे जानवरों के पास भी नहीं है और देवताओं के पास भी नहीं है। देवताओं के पास या राजाओं के पास और तरह की स्थितियां हैं, आपके पास मनुष्य का हृदय है। अच्छी कविताएं आप पढ़ें, अच्छी किताबें आप पढ़ें, और इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर लाउड पोइट्री है जो मंचों पे पढ़ी जाती है, चुटकुलेबाजी जो आती है आजकल रियलिटी शोज वगैरह में, और चुटकुले बोलते हैं और वो छोटी छोटी जो उसकी क्लिप्स होती हैं वो वायरल हो जाती है, वो बहुत अच्छी कविता हो गई, तो वो भी कविता नहीं है। कविता उतनी ज़्यादा मजाक भी नहीं है जितनी ज़्यादा बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमें मिलती है कि वो एक हास्य कविता हो गई, एक चुटकुला सा हो गया। तो ना तो चुटकुला कविता है और ना ही वो कविताएं हैं जो बड़ी ऊंची ऊंची बोली जाती है, बड़ी लाइक्स लेती है, बड़े व्यूज लेती है, बड़े हिट्स मिलते हैं उनको, और जब आप उनको पढ़ते हैं तो आप दूसरी बात को पढ़ना नहीं, फेंक देते आप पर, बस हो लिया इसका काम। तो कविता वो भी नहीं, कविता वो है जो आपको दोबारा बुलाएगी अपने पास, और जो अच्छी कविता है वो बार बार बुलाएगी आपको अपने पास, और आपको लगेगा ये मेरी बात कह रहा है कवि, और ये तो सचमुच में मेरी ही कविता है, ये उसकी कविता नहीं। आप आज भी हम अगर गालिब के शेर याद करते हैं या कबीर के दोहों को इस्तेमाल करते हैं बीच में, तो वो कबीर के नहीं है, हमें लगता है ये हमारी ही बात कह रहा है वो कोई, और जबकि सैकड़ों साल पहले वो, तो उसमें जो वो ताकत है वो आपकी पंक्तियों में तब आएगी जब आप अच्छी कविताओं के निकट होंगे, अच्छे मनुष्य होने के निकट होंगे, और बाकी तो सब चीज़ें आती रहेंगी, तो हम सीखते रहेंगे, बाकी सब लोग हम सीखते। और कविता जो है इतनी आसान नहीं है जितनी हम उसको समझ लेते हैं। कविता बहुत कठिन विधा है, हर जो विधा होती है अभिव्यक्ति की विधा, उसमें लोग अभ्यास करते हैं। जैसे म्यूजिक का है, तो जो म्यूजिक सीखता है व्यक्ति वो रियाज करता है, रोज तानपुरे उस पर बैठता है रोज, वो बड़ा रियाज करते हैं। और कविता में क्या करते हैं कि हर कोई घुस जाता है, अब हर कुछ लिख दिया और जी मैंने कविता लिख ली, तो ये इतनी आसान नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जो कविता के दरवाजे से बाहर मंडराते रहेंगे, ऊंचे ऊंचे बोलते रहेंगे मैं तो कविता लिखता हूँ, देखो मैंने इतनी कविताएं लिख दी, लेकिन वो दरवाजे से बाहर ही होते हैं, कविता उनको अंदर नहीं आने देती, वो कविता के बाहर ही मंडरा रहे होते हैं। तो आपने कविता के भीतर प्रवेश करना है, उसकी दुनिया में प्रवेश करना है, तो बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत स्नेह के साथ, और एक मनुष्य होने की सच्ची कमिटमेंट के साथ कविता की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो यही बाकी तो नाम कहेंगे। और बहुत अच्छी कविताएं थी आपकी, और आप बधाई के पात्र है कि आप कविता की दुनिया में आप कविताएं लिख रहे हैं। बहुत सारे काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर कविता हर कोई नहीं लिख सकता, इसको आप मान लें। बहुत बड़े बड़े काम बहुत अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, लेकिन कविता आपके पास तभी आएगी जब आप उसकी, वो कहते हैं ना कि भाई जो अच्छी चीज होती है उसका पात्र भी अच्छा ही होता है जिसमें वो रखी जाती है। तो आपके पास पात्र भी अच्छा होना चाहिए, तो आपके पास आएगी। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बात, और असहमत हो तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें। थैंक यू। Well, first of all, I want to thank Vandana and Kikli for this lovely opportunity, and I enjoyed myself listening to all these young girls, young women, and Varahi, she's not here. You all have done so much in this field already, and I can see that you want to go a long way on this path, the path that you have chosen for yourself. Like Sir said, poetry requires practice, and the practice begins with reading. So the first thing is to equip yourself with a lot of reading, a lot of reading outside your courses, because most of us are only reading our course books. But beyond that, reading all kinds of poetry. And then the second thing is the kind of language, or which language you would like to write in. That's very important, because sometimes
we can make the wrong choice of, like Sir said, the medium. Be very confident of your choice, whichever language or languages you will choose to write in. So, if you choose to write in 2 languages, you need to read double. You need to read in both the languages because each language has its own history, its own structures, its own metaphors, its own devices, and you would need to learn, therefore, in both the languages. Yeah. So choose it. It's hard work, as you know. You have to go back to your poem, chisel it, cut it. My advice to everybody, all those who write, including the PhD students, is don't fall in love with your work. Don't be enamored by what you have written because you need to edit it. You need to be harsh, and it may have written something very beautiful, but it doesn't fit into that poem. You have to scrap it out. And that's something that I find most people find very difficult to do. So you are your first critic. You are your first critic. So look at your work dispassionately as much as you can. Do not write for others, write for yourself. If others read it, good. But that is secondary. You must write for your own self, for your own soul, for your own pleasure. It's very important to listen to live recitations as something that we've done today. We have learned from each other, isn't it? We've been learning, and as Sir was talking to you, I was making mental notes. Okay, all right, this I should do, this I must note and remember. And all of us learned from each other. It's really nice to have people walking with you, walking down that path. And because we are so many of us, so all of us will encourage each other and also maybe even compete with each other. Or say, ask, have you written? Every time Sir meets me, he asks me, "Aur ma'am, kya likh rahe ho?" Anyway, I don't write. I have resigned from the title of writer. I'm not writing anymore. But it's nice to have people helping you. Also, start small. You all have started small. Work on the basic units of your poems and then build them up slowly. So not anybody can write an epic or a great ballad or a long poem at the outset. So start small and then take it further. Also, don't obsess on a poem too much. So you can write something, put it away, write something again, go back to the other writings you have done, keep revisiting. For English, at least, I can say not so much with that kind of confidence in Hindi or other languages, that the literary devices, very often we are using them as cliches, right? So we need to avoid the cliches. And how will we know they are cliches? If we read, then we understand that this has been done to death, and I think I will let it be now. Yeah, and use something else or coin something else. It's very important to know your devices. So there is a world of literary devices out there. So from metonymy to synecdoche to and the meters that you have in the free verse libet. When you look at, there's so much to be done over there. So it's not just metaphor, simile, image. There is so much more that you can add to the richness of your writing. Also, please make friends with the thesaurus. You need to work on your vocabulary, right? So a thesaurus would be a very good thing to have. There are online thesauruses now available, so you don't need a bulky book. You just need to access it online. So work with it. And what else should I say? One more thing. Yeah. Like Sir said, a poem should convey a big idea. The poem can be small, it can be long, but there has to be an idea there which speaks to the heart, which speaks to the mind, which makes people think long after the poetry has been read or said. It should stay with you for some time at least. Some poems will stay with you longer, like Sir talked about Kabir. Yeah. Why does Shakespeare's sonnet True Love speak to us even today? Why? We all talking about romance and true love, but what does he say? True love is a marriage of the minds, yeah, which cannot be shaken, which does not die, which does not age. Why? Because it's between the minds.
this is we always talk about souls or atma, or we talk about bodies, or we talk about hearts. Shakespeare is saying it is the mind, and he's taking us to this understanding that it has to be conscious. Love is not it happens, it has to be worked upon consciously. So marriage of true minds is a beautiful idea. It stays with you. So सारे फिल्मी गाने एक तरफ और शेक्सपियर की ये लाइन that it's a marriage of true minds एक तरफ. So you need to have an idea. We just don't sort of react to what we are seeing around us. We think, like Wordsworth said, we contemplate, we think, we reflect, and then the feeling is again aroused. So it's not spontaneous overflow just because at the spot as थोड़ा होता कोई मर गया है वहाँ पे लाश पड़ी है और आप तो डेड उस पे लिखने लग जाओ डेथ पे कोई पोएट्री, ऐसा तो नहीं होता है ना. That feeling stays with you, and that is tempered with thought and with your own experiences and your reading, and then something nice or meaningful will come out of it. Do not hanker after applause. Do not hanker after likes. Work towards your own satisfaction. And if you are happy with your poem, it doesn't matter if a Meenakshi or an Atma Ranjan says nahi achhi nahi hai. You should be convinced that what you put out is the best that you could have done, and be happy with it. Finally, it is very nice to be part of Kikli Book Club. It is very nice to be in conversation with other poets, because that helps you to build yourself. Okay, great poets have always worked in clubs and groups. So they and writers and painters, musicians. Yes, so there is always this activity. You see, the greatest writers have been part of a group or a partnership, etc. There are very few solo writers जो कहीं भी नहीं गए हों और किसी केव में बैठ के लिख रहे हों. Most of the poets have interacted with other poets. They have read other poets. They've written criticism of other poets. Criticism as in reviews. And that is how they have learned, and they've helped other poets also to grow. So happy writing. And I hope to see more of you. Thank you so much. Thank you so much. Just adding two more things from what ma'am